वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। और इस स्क्रैच चैप्टर में आज देखने वाले हैं सेशन 9 और इस सेशन में देखने वाले हैं एक एक्टिविटी का कॉस्ट्यूम्स। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? आज जो एक्टिविटी मेंशन किया गया है दैट विल बी विद द कॉस्ट्यूम ब्लॉक्स एंड द लुक ब्लॉक्स दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। ऑलराइट, सो प्रीवियस एक्टिविटी सेशन में हम लोगों ने देखा था कि we were able to use glide and we used if on edge bounce and we created an activity where the ball bounced and the sprite, जो cat का sprite है, it bounced on the edges and came back, है ना? So write that. Today the activity that we are going to see will be using look blocks. Okay, so देखते हैं what is the activity given. Make a sprite dance using the switch costume block. So हमें तो we have seen about creating a blinking light, एक disco light जैसा वाला जो balls color change करते रहते हैं, वो वाला हम लोगों ने देखा था. And we made the cat walk also. So how to make a sprite dance using a costume block? आज हम उसे देखने वाले हैं. और एक hint भी दिया गया है, you can use ballerina sprite. So ये जो sprite है, there is a sprite called as ballerina. So उसे आप use कर सकते हो. And we are going to make the sprite dance today. Okay, so right now हमें पता है you are going to use only switch costume block. Okay, next costume block use नहीं करने वाले हैं, सिर्फ switch costume block use करने वाले हैं. And whenever remember, आपको ऐसा वाला activities जब मिलता है, आपको background के भी importance देना पड़ता है. You can't stand there and dance on the desert. आपको perfectly background choose करना पड़ेगा, white background नहीं रखना है. Choose the right background from the library and choose the right sprite to do this. Okay, so chalo session ke andar let's make the sprite dance today. All right, so now we have the scratch window open with us. So hame to dusra wala sprite choose karna padega. So we are going to click on the new sprite, choose a sprite from library. Dekho, there is a ballerina here. हमने देखा था ना activity में, it asked us to choose this ballerina. So we are going to select this and click on Okay. Alright, so अभी तो that is ready, that particular sprite is ready. हमें पता होना चाहिए कि कितने सारे costumes हैं. देखो, you have a normal costume, a person, the ballerina standing there. उसके बाद एक position है, दूसरा position है और तीसरा position भी है. So there are 4 different costumes for ballerina. हम तो first costume choose करेंगे. Alright. हमें तो ये cat वाला costume अभी sprite नहीं चाहिए, so you can delete this sprite. और we already discussed that you will have to choose the background right, तभी अच्छा दिखेगा, है ना? So what we are going to do? Choose a backdrop from the library. Okay, so choose a backdrop according to a dance. Okay, हम लोग ये जो party room है ये select करते हैं. Okay, and click on OK here. Once you select it, आपका जो backdrop है that will be selected. And now you can see the size of the sprite is very small comparatively to the background. So क्या कर सकते हैं if we want to increase this size? हमने तो एक black block already देखा था. How can you increase the size? Yes, look blocks में जाके change size by दे सकते हैं, है ना? So if I want to increase it like 50 units, double click करना है. Yes, now my ballerina is increased in size, है ना? If you want to increase it more, you can do it. All right. So जो size fixed रहेगा, we'll increase that and we'll have the size mentioned. Okay. So अभी तो it is ready now. So what we'll be doing? हमें तो पता है you have to switch costumes and we'll have to make a dance. And we know that her costumes are also dance steps. जो steps हम लोगों ने देखा था costumes में, they are all dance steps, है ना? So what we are going to do in the script, we are going to do something similar to what did we do for the changing ball one, है ना? जो ball change कर रहा था colors, what did we do? We did nothing but just switch costume दिए थे और weight block use किए थे. So we are going to use the same thing again. Alright. So क्या करने वाले हैं? First तो
स्विच कॉस्ट्यूम देने वाले हैं एंड सेकेंड कॉस्ट्यूम, उसके बाद वेट 1 सेकेंड, यही डुप्लीकेट करने वाले हैं. अगेन डुप्लीकेट. ओके, कितने सारे कॉस्ट्यूम्स हैं? वी हैव 1 2 3 एंड 4. सो हाउ मेनी कॉस्ट्यूम्स आर देयर? बी, सी, डी और वापस ए. वी आर गोना मेक हर डांस ट्वाइस. सो क्या कर सकते हैं? द एंटायर लॉट कैन बी डुप्लीकेटेड एंड कॉपीड. ऑलराइट, सो पहले तो आई वॉन्ट द कॉस्ट्यूम ऑफ ए, है ना? सो पहला कॉस्ट्यूम क्या रहना चाहिए? क्लिक ऑन ballerina sprite, go to costume and select the first costume. She should be standing, she shouldn't start dancing immediately, है ना? So first we'll make her stand there and after that we'll make her dance. Okay? So right now we have seen the code is ready. जो code हम लोगों ने किया था, we have used switch costume. पहले तो second costume पे जाना है, 1 second wait करना है, then the third costume, wait 1 second, fourth costume, wait 1 second. So we have made a sequence of blocks. Always remember, आपको ये जो space है ये नहीं रहना चाहिए. आपका जो blocks है it should be fixed to one another. Only then हर एक block sequentially run होगा. Alright? So अभी double click करके देखो. 2, 3, 4. So is she dancing there? Yes, she is. है ना? So switch costume से you can make a costume, make a sprite dance as well. जैसे हम लोगों ने different color का ball किया था, how did we make it blink, वैसे वाला we can also make her dance like this. Okay? अभी सोचो कि you want to change costumes here. Okay? You want to interchange costumes, वो भी आप कर सकते हो. Alright? For example, if you're going to have costumes interchanging, तो क्या होगा? It will be like as though her dance step is changed. देखो अभी डबल क्लिक करो. So this is how you can find it easier to do a dance. Okay? So अभी switch costume से हम लोगों ने किया था. For example, हम लोगों को next costume से करना पड़ा. How can you do that? आपको default costume select करना बहुत ही important है when you are using a next costume. क्यों? Because the next costume goes in the order from the costume that is present right now. अगर ये जो B वाला costume से आप start करोगे तो next costume will immediately go to C. It will not come to A. So default costume perfectly select करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? We have to use next costume. Looks blocks में जाओ और उसमें next costume use करो. उसके बाद control block में जाके wait use करना पड़ेगा. So again duplicate this. ये कितने भी चाहिए बार you can type this because ये जो next costume होता है that is going to make it appear in a circular motion. अगर E costume खत्म हो गया तो automatically it goes to A costume again. समझ में आया आपको? So you can use it any number of times that you want. देखो if you're duplicating it again. So now this is going to be a long dance, है ना? So बहुत सारे time के लिए होने वाला है. So let's try double clicking on this. You can see the costumes change and again come back to the same costume. So हम लोगों ने previous session में क्या किया था? Previous activity में we tried mentioning the costume numbers, costume names. यहाँ पे जो है, this is not necessary for you to use the costume numbers or names. आप सिर्फ next costume click करने के बाद wait block डालना पड़ेगा और उसके बाद this starts working out. Okay? So always see to that how the question is asked. Activity में अगर आपको switch costume ये use करने को बोला है तो you have to use only switch costume. You should not use next costume. Okay? So switch costume use करके ही आपको ये जो dance है, ये जो animation है create करना पड़ेगा. When they are asking you to just make a sprite dance, आप जो भी sprite choose करना है कर सकते हो, जो भी block use करना है, either next costume और switch costume use कर सकते हो. Alright? मगर ये जो activity में हम लोगों ने देखा था, we had a specification. उन लोगों ने बोला था कि make a sprite dance using switch costume. So switch costume से करना पड़ा.
and also it also asked us to use the ballerina. अगर वो ballerina को नहीं mention करते हैं तो you can use any of the sprites which has got multiple costumes. समझ में आया आपको? So this is how we will do the activities. आपको activities practicals में ऐसे पूछने से आपको ये जो blocks है ये create करना पड़ेगा, and when they come, when the teacher comes to you, you are supposed to double click on the entire block of code. यहाँ पे जो errors आएंगे, I mean possible errors क्या होंगे? The costume का sequence बदलने होंगे, alright? या फिर आप जो blocks को attach करना भूल जाते हैं ना, that time you will have a error in this. जब scratch जो है, it is not going to show you errors at all. ये तो जैसे आपने QBasic में देखा था या other programming languages में देखा था, this is not going to show you errors. Scratch जो कुछ scripts है वो वैसे ही run करेगा. So output को देखते ही हमें पता चलेगा कि error है या नहीं. Okay? So when you count the number of costumes you have used and the number of costumes that is changing on the screen, उसके हिसाब से we can find out whether there is an error or not. Okay? So आपको क्या करना पड़ेगा? आपको first thing ये देखना पड़ेगा कि all the blocks are connected to each other or not, and then the sequence of the blocks. ये भी आपको देखना पड़ेगा. अगर आप even for an instance if you put a wait block here, क्या हो जाएगा? Just the first costume will wait for 2 seconds, और ये जो costume बदल रहा है ना, it will instantly change and will not see the change. So always remember, आपको ये sequence of blocks or the connection between blocks should be taken care when you're doing an activity in Scratch. Alright? So what did we see today? We have seen about an activity which makes a sprite dance using 2 different blocks. एक तो first we tried about the switch costume block, and next one we also saw about the next costume block. So in the next session we will see more about the different kind of blocks. So meet you in the next session. Until then, bye bye.